ओके वेरी गुड तो जॉइंट सिटिंग टा हमर कहूची ना 108 आर्टिकल नंबर 108 जॉइंट सिटिंग किए डाकंती प्रेसिडेंट डाकंती तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को डाकंती एंड हमर जॉइंट सिटिंग टा किए प्रिसाइडेड करंती ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा तो तीन चारटा जिन मन रखिबो जे स्पीकर हेबे इज द मेंबर ऑफ लोकसभा निहाती हेतिबा दरकार एंड तांकर जदि भी हमर हाउस टा डिजर्व हेउची स्पीकर कर ऑफिस निहाती रहे गोटे बिल टा मनी बिल कि नहीं स्पीकर सर्टिफाइड करंती सी प्रथमे वोट दियंतिनी जेतेबेले गोटे बिल टा ऑर्डिनरी बिल टा जेतेबेले हमर टाई हे जाए और इक्वली डिवाइडेड हे जाए तो सही केस रे सी जो वोट दियंती तां कास्टिंग वोट हो जाए जॉइंट सिटिंग जेतेबेले गोटे ऑर्डिनरी बिल केस रे डेडलॉक हे जाए सपोज लोकसभा रे पास हे जी राज्यसभा रे पड़ी के अछि तो सही केस रे प्रेसिडेंट गोटे जॉइंट सिटिंग डाकंती अंडर आर्टिकल 108 रे आउ एटा को स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइडेड करत जदि से रिजाइन करिवे रेजिग्नेशन लेटर देबे डेप्यूटी स्पीकर को डेप्यूटी स्पीकर जदि रेजिग्नेशन देबे का को देबे ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देबे ओके तो एटा हो जे हमर स्पीकर को ऊपर हमें मन रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 Consider the following statement: the Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. First statement. Second, the governor of a state nominate the chairman of the Legislative Council of that particular state. कौन होगा आंसर आ रहा? Only we two both neither. D हवा ओके D हवा हमरा करेक्ट आंसर प्रथम स्टेटमेंट अछि द लेजिस्लेटिव काउंसिल state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of particular state eta wrong अछि कौन करेक्ट स्टेटमेंट हबो cannot be larger कौन हबो ना cannot larger केता हबो 1/3 of the total seat of state legislative assembly माने गोटे स्टेट रो विधानसभा रे जति की सीट अछि तार 1/3 रो हमरा एक्सिड करिले सपोज ओडिशा केस रे हम कहछे ओडिशा रे केतरा सीट अछि 147 टा सीट अछि तो मैक्सिमम ओडिशा रे जदि विधान परिषद हैला लेजिस्लेटिव काउंसिल हला केतरा हबो तार 1/3 माने 40 रो एक्सिड करबो नहीं ओके so maximum strength of a legislative council of a state is depend on strength of its legislative assembly तो legislative assembly रे सही state रो legislative assembly रे जति की हमरो नंबर ऑफ सीट थाए 1/3 हमरो नंबर ऑफ सीट एक्सीड करिवो नै ओके सेकंड कथाला जे जे काउंट चेयरमैन हबो हमर लेजिस्लेटिव काउंसिल रो तो से केति हमर गवर्नर तांको नॉमिनेट करंती ना इलेक्टेड हुअन तांको मेंबर तो सेकंड होची ये जे चेयरमैन हेबे he should be elected by the member of the legislative council तो से तांको भितरु जणको इलेक्ट करंती नॉट बाय द गवर्नर तो सेति पई ए स्टेटमेंट ता हमर रॉन्ग होची ओके तो दीटा का स्टेटमेंट रॉन्ग होची आइदर वन नॉट टू नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 22. Consider the following statement with reference to India. Okay. तो क्वेश्चन ता पढ़ो आगो वॉइस ब्रेक होसी कि हमें ऑडिबल समस्त मो वॉइस आसुची ना नहीं यस नो सर वॉइस ब्रेक होउची सर वॉइस टिके ब्रेक होची आसुची तो किसी प्रॉब्लम नहीं वॉइस ब्रेक
समस्त वॉइस ब्रेक होची आज्ञा सर Okay, now clear. Okay, प्रथमे देखो जे consider the following statement with reference to India. The Chief Election Commissioner and other election commissioner en- enjoy equal power but receive unequal salary. ठीक ना भूल भूल अच्छी कौन ताले correct statement कौन both enjoy equal power and equal salary. ओके तो पचारि इक्वल पावर एंड रिसीव अनइक्वल सैलरीज एटा रॉन्ग अछि समस्तंकर पावर भी एका इक्वल पावर एंड इक्वल सैलरी ओके ओनली थिंग होची जते बेले हमर इलेक्शन कमिश्नर को बाहर करा जाए तेतले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही डिसाइड करंती रहिबे ना नै किंतु अदर केस डिसीजन मेकिंग केस रे मने रखि थाओ तीन जन जकर इक्वल पावर आउ इक्वल सैलरी हमर रहउची. Second statement, the Chief Election Commissioner is entitled to same salary as the provided to Judge of Supreme Court. एटा ठीक अछि ना रॉन्ग अछि ठीक अछि तो Chief Election Commissioner जी तांकर salary is equivalent to the Judge of the Supreme Court. अदर जो हमर रहिले जज जो इलेक्शन कमिश्नर ओके तो तांकर Supreme Court रा जज the Chief Election Commissioner shall not be removed from the office except in like manner and like the ground as a judge of the Supreme Court. एटा ठीक अछि ना रॉन्ग अछि तो मन रखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाहर करिया पले कंडीशन कोन ना कंडीशन इज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रा जज केते बाहरंती ना प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तेणु जति तांकर जदि मिसबिहेवियर केस हेछि सेटा प्रूव्ड होबा दरकार और इनकैपेसिटी ए ग्राउंड रे तांको बाहर करा जाय तो सेम ग्राउंड रे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाहरंती ओके तेणु एटा तमे मन रखिथिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन that the term of the office of the election commissioner is 5 years from the date he assumed the office or till the date he attained the age of 62 whichever is earlier. रॉन्ग अछि तांकर इलेक्शन कमिश्नर कार्यकाल केते 6 or 65 ओके व्हिचएवर इज earlier तेणु मन रखिबो इलेक्शन कमिशन जो हमें कहिबा केते नंबर आर्टिकल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 324 ओके 324 अछि काहर ये इलेक्शन करंती ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एंड एमएलए एमानकर इलेक्शन करंती ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करंती ओके तो टोटल 3 जन थांती 3 जन रु जणे हमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ 2 जन इलेक्शन सेमान को अपॉइंटमेंट के दियंती अपॉइंटमेंट मान को प्रेसिडेंट दियंती ओके सेमान को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट दियंती तांकर कार्यकाल होची 6 और 65 समस्तकर सैलरी पावर सेम सेमान को जो हमर कोन होची सुप्रीम कोर्ट रो जति जज जति पांती तांको सैलरी दिया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाहर करिया पहले तमको लाइक सुप्रीम कोर्ट रो जज जति बाहर थी सिमिलर से ओके so our answer amar hejbo 2 1 is the correct answer. Okay, next question. The minimum age prescribed for any person to be a member of Panchayat is 25 years. A Panchayat reconstituted after premature dissolution continue only for the remainder period. So, कौन हवा हमारा correct answer? ओके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो जे तमे जदी जो इलेक्शन में लड़िया को चाहो मिनिमम एज केते 21 इयर्स मन रखिबो 21 इयर्स इज द मिनिमम एज
टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो मेंबर हवा पई जदी पंचायत राज रो टोटल हमर जनरली द टेन्योर केते 5 वर्ष ओके 5 इयर्स हो तार टेन्योर जदी सपोज प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन माने सपोज 3 इयर्स रे एटा हमर डिसॉल्व हो गेला तो जो नुवा गवर्नमेंट फॉर्मेशन हबो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट ना रेस्ट ऑफ द पीरियड रिमाइंडर पीरियड माने 3 वर्ष कंप्लीट बाकी रह गेला केते गेला तो रिमाइंडर 2 इयर्स पाई हमर कोन हबो ना इट विल बी ओके तेणु मन रखिबो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो हमर आउ केतडा इंपोर्टेंट पॉइंट मते कुह ओके तेणु मॉक टेस्ट जेतला हमें करबा टोटल रिवीजन करबा ओके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो मीनिंग कोन परीक्षा रे पड़ितला डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द ग्राउंड बोली हमें कहूचे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हमर कोठी मेंशन अछि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूर्व डीपीएसपी रो केते नंबर आर्टिकल ले मेंशन अछि आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केबे दिया गला 1992 केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे दिया गला आपे गोटे नुवा पार्ट ऐड करा गला पार्ट केते पार्ट 9 शेड्यूल केते शेड्यूल 11 केतडा हमर फंक्शनल आइटम रहला 29 फंक्शनल आइटम 29 का सब्जेक्ट अंडर रे रहबो केते नंबर आर्टिकल 243 रु 243 ओ ओके एंड हमर ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो इंपोर्टेंट हमें कहले जो कंपलसरी प्रोविजन गुडा को ग्राम सभा रे को माने रहिबे all the eligible voters who belong to that particular gram panchayat sei gram panchayat ra heithibe jodi aude gram panchayat ro so they will not take part in the gram sabha three tier government कथा कहले three tier government माने हमें तो तीनटा लेयर रहइबो तमरा ओपीएससी प्रीलिम रे पढितला पंचायत राज जदी पढिबो 6-7टा पॉइंट मन रख तार भितर ही पढिबो तो three tier government gram panchayat in the village level intermediate और block level तापरे डिस्ट्रिक्ट लेवल हमर जिला परिषद रहबो तो मिडिल टा हमर कोन रहला ब्लॉक और पंचायत समिति और इंटरमीडिएटरी तीनटा एक लेयर है हमर डायरेक्ट इलेक्शन हुए मेंबर ऑल लेयर आर डायरेक्टली इलेक्टेड ओके डायरेक्टली ए माने कोन करिवे इलेक्टेड हेबे ओके 1/3 रिजर्वेशन हमर कोन रहबो 1/3 रिजर्वेशन रहबो ओमेन मानव पई ओके ओमेन मानव पई 1/3 रिजर्वेशन रहबो अंकर इलेक्शन किए करूची पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो स्टेट इलेक्शन कमिशन हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो हमर इलेक्शन करिवो टोटल जो नेट टैक्स कलेक्शन हबो स्टेट रो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट तो केते हमर पंचायत को जियो किए हमर कहबो स्टेट फाइनेंस कमिशन ओके तो एति कि तमे एई पॉइंट को मन रखिबो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो हमें कहले डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल और डेमोक्रेसी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द ग्राउंड लेवल हमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कहूचे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला ड्यूरिंग पीबी नरसिंह राव को टाइम में ओके एंड 29 टा फंक्शनल आइटम अछि शेड्यूल 11 पार्ट 9 रे हमरो प्रैक्टिकल शेप एट हमर देला आर्टिकल 40 को जोडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे हमरो मेंशन थिला ओके एंड स्टेट इलेक्शन कमिशन आर इलेक्शन करू स्टेट फाइनेंस कमिशन आर टोटल टैक्स जो कलेक्शन ला केते पंचायत को दिया जिवो आ मिनिमम एज हो 21 वर्ष जदी प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन हला ताहाले हमर कोन होची ना जे गवर्नमेंट आसीबो रिमेनिंग पीरियड पाए हमर ओके नेक्स्ट होची ए क्वेश्चन आईएएस रा प्रीलिम रे पढितला ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज सिस्टम इनिशिएट विज ऑफ द फॉलोइंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो मेन एम कोन all okay 1 and 3 okay correct answer होची कोन ना 1 and 3 होची करेक्ट आंसर ओके 1 and 3 होची करेक्ट आंसर तो हमर कोन होची ना हमर होची कोन ना प्रथम 8
पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट हमें कहले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कथा कहले और डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल जो थिरे पीपल माने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करछन इन द जो प्रोसेस रे एंड तमर एटे कोन नाइडा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कथा हमें कहले सो 1 and 3 कथा में करेक्ट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इनडायरेक्ट थिंग सो करेक्ट आंसर हो हमरा कोन ना 1 and 3 जो हमरा करेक्ट आंसर ओके हां 73rd Amendment Act एबे जस्ट मु तुमको कहितली 73rd Amendment Act 1992 which aims at promoting Panchayati in the country provides which of the following वॉइस ब्रेक पुणी हला am I audible Yes, sir. ठीक सुबुची तो Yes, sir. Now clear. छाड़ दे सेटा सेडी लगे कथा थिला ना एटा के हो सर मझिरे टिके ब्रेक हे जाउछ भॉइस ओके ठीक अछि तो इधर हम कोन हबा हम कहले ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हैला प्रथमे हम कहितले स्टेट फाइनेंस कमिशन गोटे रहइबो से कोन करिवो ना जत्ती की टैक्स कलेक्शन हैला स्टेट रे ओ ग्राम पंचायत को केते दिया जीवो सेटा से जिन द नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन द स्टेट एंड डिफरेंट ग्राम पंचायत सेटा हमरो डिसाइड करिवो तो स्टेट फाइनेंस कमिशन गोटे रहइबो तापर इलेक्शन किए करिवो ना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अंकु इलेक्ट करिवो तो अंकर ए जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अंकर अपॉइंटमेंट किए दियंती ओके एंड रिमूव किए करिवे ओके अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड रिमूव बाय हमरो प्रेसिडेंट जदी बा हमरो गवर्नर हमरो अपॉइंट करूछंती किंतु रिमूव करिवे किए ना प्रेसिडेंट हमरो रिमूव करिवे ओके तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हमरो इज नॉट ए पार्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ओके एइथिरा हमें कोन कहले ग्राम सभा कथा कहितले 3 टायर पंचायत राज स्टेट इलेक्शन कमिशन स्टेट फाइनेंस कमिशन डायरेक्ट इलेक्शन अब 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन हमरो ए जो जिनसोडा का हमें कहितले ओके तो सेति पे आंसर कोन हेजबो ना 2 and 3 हेजबो 1 टा हमरो रॉन्ग अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रेसिडेंट करो इलेक्शन तो कौन हबो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर पार्ट ऑफ president and vice president election member of the state legislative assembly do not take part in the election of the vice president member of dissolved state legislative assembly cease to be qualified to vote in the presidential election फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि ना भूल अछि elected and nominated member of the part of the electoral college of president यदि मु प्रेसिडेंट काटी की वाइस प्रेसिडेंट खाली कहि थांती एटा ठीक ना भूल ठीक था सर इलेक्टेड बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ टोटल माने हमें कहबा लोकसभा राज्यसभा सब मेंबर इलेक्टेड होंतु और नॉमिनेटेड होंतु दे आर पार्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट करो इलेक्शन प्रोसेस रे भाग नियंती किंतु प्रेसिडेंट का इलेक्शन रे ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा पार्टिसिपेट करंती एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली and elected member of the union territory having legislature तो जो यूनियन टेरिटरी गुडा करे लेजिस्लेचर अछि माने विधान सभा अछि ओडी अछि दिल्ली रे अछि पांडिचेरी अछि जम्मू एंड कश्मीर तो तार इलेक्टेड मेंबर स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्टेड मेंबर एंड लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर माने हमरो प्रेसिडेंट करो इलेक्शन प्रोसेस रे भाग नियन तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट देती इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर मैं जानि छ जे प्रेसिडेंट करो इलेक्शन रे नॉमिनेटेड मेंबर माने भाग नियंती ओनली इलेक्टेड मेंबर माने हमरो भाग नियंती तो सेति पई हमर ए स्टेटमेंट कोन अछि रॉन्ग अछि मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ठीक अछि जे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन में को माने भाग नियंती ना ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा रो हमर जो माने इलेक्टेड होंतु नॉमिनेटेड होंतु तो एटा हमर ठीक एटा कोन ठीक अछि कोन सी स्टेट रो एथिरे रिप्रेजेंटेशन हमर रहे member of the deserved state legislative assembly cease to be qualified to vote the presidential election एटा हमर ठीक अछि ना भूल अछि तो एटा भी हमर ठीक अछि ओके तो जदी में जो विधान सभा वर्तमान नाही तो तार मेंबर माने ही हमर कोन करि परिबे ना वोट देबे ओके तो आंसर कोन हबो ना 2 1 3 हे जबो हमर correct answer which one of the following statement is or are correct with reference to ordinance making power of the governor तो कोडा प्रथमे कुह ordinance making power गवर्नर का कितना नंबर आर्टिकल प्रेसिडेंट कर माने रखो 1 2 3 गवर्नर कर होची केते 213 213 123 213 प्रेसिडेंट कर 123 1 2 3 अंकर 213 ओके तो को केस रे गवर्नर हमर ऑर्डिनेंस इश्यू करि परिबे it is a discretionary power in case of bicameral legislature ordinance can be promulgated when the state legislative council is not in session it is wider than the legislative power of the state legislature Okay, very good. Manoranjan, Manasmita, Fazal, Ashwini, Mona. Okay. Amara kon haba na only 2 is the correct answer. Okay. So it is a discretionary power. No. So ordinance केते बेले हमरा आसे ना जते बेले कैबिनेट मानु को रेकमेंड करिवो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करिवे सेते बेले हमरा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आसे एटा डिस्क्रिशनरी पावर ना नुहे तो केते बेले आसे ना जते बेले आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा और विधान परिषद जोडी विधान परिषद अछि दीडा का हाउस जदी सेशन ने नाही किंबा तांका भितर गोटे हाउस जदी सेशन रे नाही ताहल तमे ऑर्डिनेंस करि परिबो कारण गोटे लॉ तयारी करिया पई बोथ हाउस रे पास हो दरकार सेति पई हमर ऑर्डिनेंस माने कोन गोटे ऑन माने गोटे क्रिटिकल सिचुएशन जेतले हमें चाहू गोटे निहाती गोटे लॉ आनिया पई किंतु लॉ तयारी ही पनी बिकॉज़ द हाउस हमर सेशन ने नाही से माने सिना थिले बिल टा को पास करले लॉ हबो जेहेतु से सेशन ने नाहंती तो प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट रे गोटे ऑर्डिनेंस थ्रू रे गोटे बिल टा नै के आसंती एंड जदी दीडा का हाउस और आइदर हाउस हमरा सेशन ने नाहंती तो तांकर ऑर्डिनेंस में पावर कितना नंबर आर्टिकल 213 नंबर आर्टिकल आ से कोन ऑर्डिनेंस जहा मन सब लिस्ट करि परिबे नो तो स्टेट जो ऊपर लॉ करि परिबो विधानसभा रो जहा पावर अछि जो ऊपर सेंट्रल सब्जेक्ट ऊपर स्टेट लॉ करि परिबो ना तो केवल स्टेट सब्जेक्ट ऊपर स्टेट लॉ करि परिबो तेणु सी सेही स्टेट रो सब्जेक्ट ऊपर हमर ऑर्डिनेंस नै के आसी परिबे सो हमें कहि इट इज वाइडर दैन लेजिस्लेटिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर नो तो विधानसभा रे जेति कि हमर पावर अछि जो थिरे से हमर लॉ करि परिबो सेति कि सब्जेक्ट रे हमर गवर्नर लॉ ओके एंड एक जो ऑर्डिनेंस ता नै के आसीबे जो गवर्नर तार केते दिन भीतर एटा हमर पास होबा दरकार सपोज हमें कहिले विधानसभा सपोज 1 मंथ पर बसिला ओके जेबे बसिबो हमर सेशन रे आसीबो से जो लेजिस्लेटिव असेंबली आ विधान परिषद तो तार 6 वीक भीतर एटा पास हो दरकार तो मे भी हमें कहिले जे 2 मास पर बसि पारे 3 मास पर बसि पारे 4 मास 5 मास पर बसि पारे जेबे भी बसियो किंतु तमे जानि छ जे 6 मास रे थरे डेफिनेटली बसिबो सेति पई हमें कहू जे 6 मास रे तो गोटे थरा बसिबो सपोज 6 मास रे बसिला तो 6 मास रे बसिला माने तार 6 वीक भीतर एटा हमरा कोन हबो पास हो दरकार सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हमरो ए जो मैक्सिमम लाइफ ऑफ ए ऑर्डिनेंस होची 6 मंथ and 6 week 6 month and 6 week ओके बुझी परलो 6 month and 6 week तेनु आंसर कोन हिजबो ना ओनली 2 हिजबो हमरो करेक्ट आंसर
हमरा आप रे ऑलरेडी 4 नंबर टेस्ट जाय पूरा डिटेल रे एमती दिया है जाय एक्सप्लेनेशन सह तळु तळ तो रिवीजन बेले तुमको इजी हो ओके सो क्वेश्चन नंबर 28 consider the following statement with reference to Union Public Service Commission UPSC. It is consulted by the government while making the reservation of appointment in favor of backward class of the citizen. A selection by UPSC does not confer a right to the post upon the candidate. Only two. Very good. Okay. Only two is the correct answer. देखो गवर्नमेंट जतले रिजर्वेशन दउची सपोज हमरो एबे ईडब्ल्यूएस मानक पई दिया गला 10% रिजर्वेशन और ओबीसी पई 27% हमर रिजर्वेशन दिया गला तो से जो रिजर्वेशन हमरो 10% और 27% हमर दिया गला सेटा हमर कोन होची ना तमरो यूपीएससी को पचारि के गवर्नमेंट जहा डिसीजन हो दैट इज सेपरेट आउ हमर कोन होची जे सिलेक्शन बाय यूपीएससी यदि भी सिलेक्शन तुमको दे देला इट डज नॉट मीन कि अपॉइंटमेंट यूपीएससी एटा गोटे हमें कोन कहितले रिक्रूटमेंट एजेंसी जे खाली सिलेक्शन कला फाइनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुमको दउची डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल तेनु ए सिलेक्शन बाय यूपीएससी डज नॉट कन्फर्म द राइट टू पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट फाइनली जदि गवर्नमेंट भी तुमको रिजेक्ट करि पारे मे बी मेडिकल काउंट रे और मे बी सम क्रिमिनल एक्टिविटीज जदि तुम इन्वॉल्व अच्छा से ग्राउंड रे भी तुमको रिजेक्ट करि पारे तेनु ये खाली सिलेक्शन करि के देला जे नाही दिस इज ए फिट कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इंटरव्यू इज क्वालिफाइड ओके तेनु हमरा ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर एटा होची तो यूपीएससी रो केतना आर्टिकल अछि यूपीएससी केतना नंबर आर्टिकल कितना नंबर पार्ट रे ओके पार्ट 14 315 323 एई आंसर का की अपॉइंटमेंट किए दियंती मेंबर चेयरमैन को प्रेसिडेंट हमर कोन अपॉइंटेड करंती चेयरमैन आउ मेंबर ओके तमरो कार्यकाल केते वर्ष मानकर 6 और 65 परीक्षा रे पडितला ओपीएससी 6 और 65 मन रखि था यूपीएससी इलेक्शन कमिशन सीएजी ए तीन जन कर कार्यकाल हला 6 और 65 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ओके तापरे हमें कहले एइथरे जनरली केते जन मेंबर थांती हां 9 to 11 ओके तांकर क्राइटेरिया किछि अछि कि माने एमती किछि प्रेसिडेंट आउ जनरल क्राइटेरिया कोन हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी एनी पब्लिक जो ऑफिस होल्ड करिथिबे और 10 इयर्स by एनी ऑफिस माने होल्ड करथिबे ओके तो आंसर कोन हबो ना ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर 315 323 315 323 होछि पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आन तमे जानि छ जे एमानकर अपॉइंटमेंट किए ना प्रेसिडेंट करंती कार्यकाल होछि 6 और 65 in context of Indian political system who among the following takes the oath of secrecy oath of secrecy हाँ 2 आउ 6 ओके तो सिक्रेसी माने कोन सीक्रेट रिवील करबनी माने यू शुड नॉट हां द यू शुड कीप द सीक्रेट माने एमिति किछि जोडा कि सीक्रेट थिंग यू शुड नॉट टेल योर माने क्लोज अलाइ कि आउ काहा को कहबनी तो प्राइम मिनिस्टर माने गोटे डेफिनेटली गोटे जतबे हमर नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को जदी आसुची कोनोसी डिसीजन से माने नौचंदी और फॉरेन पॉलिसी को नेकी नौचंदी और अलग किछि हमर बजेट ऊपर नौचंदी
so they should not disclose that information सेथि पई से माने शपथ पाठ करछंदी oath of secrecy जेहेतु you are a important person prime minister हंतु और मिनिस्टर तो जो माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे रहिले और चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर तो से माने सिक्रेसी मेंटेन करंती ता पई हमर कोन ओथ ऑफ सिक्रेसी करा जाय एमानकर किसी नाही प्रेसिडेंट हो चीफ जस्टिस हो स्पीकर ऑफ लोकसभा कारण एमान को पई ओथ ऑफ सिक्रेसी हमरा होय सो बिफोर प्राइम मिनिस्टर chief minister of the both center of state enter their respective office they administer the oath of office as well as secrecy तो दीटा को एमान को केस रे प्रेसिडेंट एमान को केस रे चीफ जस्टिस और स्पीकर से माने केवल ओथ ऑफ ऑफिस करन ऑफिस को जिबा पूर्व शपथ पाठ करंती किंतु तांको पई सेपरेट आउ गोटे ओथ ऑफ सिक्रेसी से करंती किंतु प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर जो माने रहिले से माने ओथ ऑफ सिक्रेसी करंती oath of secrecy माने कोन ना they swear that they will not directly or indirectly communicate or reveal any person any matter that brought under his or her consideration or become known to him or except as may be required for the due discharge of his duty तो तांको जोडा रोल्स रेस्पोंसिबिलिटी से माने आउ खा को कहिबे तो सेडा सीक्रेट मेंटेन करिवे अदर गुडा को प्रेसिडेंट रहले प्राइवेट मेंबर से माने केवल ओथ ऑफ ऑफिस रहे ओथ ऑफ सिक्रेसी मनन पई रहे नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू ए मोशन इन द लोक सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन हवा आंसर आरो हां तीनटा को ओके करेक्ट आंसर 1 and 3 हबो ओके प्रथमे हमरा एडजॉर्नमेंट मोशन माने कोन जानि छ जेते बेले गोटे हमरा इंपोर्टेंट मैटर डिस्कशन करिवार अछि सबु जिंस बंद करी ता ऊपर हमरा डिस्कशन हो सपोज मणिपुर रे वायलेंस होला तो ता पई गोटे एडजॉर्नमेंट मोशन जेते पास करा जाय जहां भी हमरा हाउस रो फंक्शन अछि सबु बंद करा जिवो आगो जोटा अर्जेंट डिस्कशन करिवार अछि सेटा ऊपर हमरा फोकस करके डिस्कशन जेते बेले जम्मू एंड कश्मीर रु आर्टिकल 370 हटे दिया गला जम्मू एंड कश्मीर को गोटे स्टेट रु यूनियन टेरिटरी करा गला ता पर दिन हमरा एडजॉर्नमेंट मोशन पास कराइथिला कारण दैट इज ए इंपोर्टेंट मैटर इमीडिएटली सेटा डिस्कशन हुए आ गोटे एडजॉर्नमेंट मोशन डिस्कशन पई मिनिमम केते टाइम दरकार एटा स्टार्ट हेले हमरा मिनिमम केते टाइम पर्यंत सेटा डिस्कशन हुए 2.5 घंटा मिनिमम तार डिस्कशन ओके एडजॉर्नमेंट मोशन जदी हमरा जो ओना गला मिनिमम हमरा 2.5 आवर डिस्कशन हबो सो इट allows the member to raise a matter of urgent public importance तमे जदी नोटिस ऑफ द मोशन देला in writing and address to speaker का दबो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा तो लोकसभा रो जी सेक्रेटरी जनरल ऑप्शन थी तांकू दबो तो जे एडजॉर्नमेंट मोशन पास करिया को चाहू मोशन कैन बी disallowed by the speaker if it is after the procedure of the house yes speaker is the boss of the house से डिसाइड करिवे कोन हमरो चलिबो हाउस भीतर कोन न चलिबो इवन इफ तमे कोन कहिबो भी सेटा भी स्पीकर डिसाइड करबे एबे मझी रे से गोटे डिक्शनरी नै के आसीतिले सेही भितरे गोटे हिंदी रो को वर्ड तमे न कहिबो से डिक्शनरी भितरे अछि तो ता पई भी हमरो कोन होची अपोजिशन वाला हमरो वॉइस रेज करथिले कि एटा हैम्पर करछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें कोन कहिबु न कहिबु स्पीकर काहे डिसाइड करबे किंतु स्पीकर कर एटा होची पावर अछि जे पार्लियामेंट रो लोकसभा भितरे जहा हबो he has the authority to decide that one okay तो एटा हमरा 3 टा कोन होची ना ठीक अछि तो आंसर कोन हबो ना हमरा 1 and 3 is the correct answer okay question number 30 with reference to the governor of a state consider the following statement only one very good okay
तो ओनली वन आमे कहबा तो 7th रख गोटे लोक दीटा स्टेट रो गवर्नर हे परिबो ना नाही एडा केबे अमेंडमेंट एक्ट रे आसी एडा परीक्षा रो गोटे क्वेश्चन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे आसी जे गोटे लोक दीटा स्टेट रो हे परिबो जेमति कि हमर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश रो गवर्नर हमर जणे थिले मझिरे हमर गुजरात रो जे चीफ मिनिस्टर थिले कोन तांगा ना जणे लेडी थिले उत्तर प्रदेश रे किया अछंती गवर्नर आनंदीबेन वसुंधरा राजे मध्य प्रदेश रो थिले उत्तर प्रदेश रो थिले आनंदीबेन तमिलनाडु पटेल। कर्नाटक गवर्नर जणे थिले तो जणे लोक दीटा स्टेट रो गवर्नर हे परिबे तो एटा हमर केबे ना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे हमर एटा आसीतला किंतु सैलरी सी डबल पाइबे ना कोन केमती सैलरी सेम रहिबो धर से 2.5 लाख टका पाउछंती सेम रहिबो सैलरी सैलरीटा दीटा स्टेट बांटी के देबे ओके नाही कि डबल सैलरी पाइबे एठू 2 लाख सेठू 2 लाख नो सेही 2 लाख पाइबे किंतु जोडे बड़ राज्य में भी टिके अधिक दबो जोडा छोट राज्य से टिके कम दबो सो अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द 2 or more स्टेट इज पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नो कोड दिया जाय ई सैलरी हमरो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट तांकर दिया ओके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट रो इटा हमरो ओके तो आंसर कोन only one तेणु आर एक्सप्लेनेशन होची जे आर्टिकल 153 of the Indian Constitution state that there shall be a governor for each state later through 7th Constitutional Amendment Act 1956 it state that जे governor for 2 or more state हमर जणे रही परिबो सेकेंड होची the said person is appointed as the governor of 2 or more state the salary or allowance payable to him is shared by the state दीटा को स्टेट हमर कोन करिवे शेयर करके सेटा हमर नंबर 52 आ दिल्ली एबे बहुत न्यूज रे अछि अरविंद केजरीवाल हमर अरेस्ट हेसंदी तेनु very very important consider the following statement with reference to National Capital Territory of Delhi are appointed by the Lieutenant Governor the term government referred to in any law made by the state legislative assembly implies the Lieutenant Governor can promulgate ordinance when the assembly is dissolved or suspended कौन हम कोडा हमर कौन कहि छी 1 only 1 2 only 3 only none देखो प्रथम चीफ मिनिस्टर अदर जो मिनिस्टर माने रहिले एमान को किया अपॉइंटमेंट दो प्रेसिडेंट माने रखिबो एडा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन जोडा आईएएस रो प्रीलिम क्वेश्चन मन रखिबा चीफ मिनिस्टर की अदर मिनिस्टर जो माने रहिले दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट द टर्म ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्ड टू एनी लॉ मेड बाय द स्टेट legislative assembly implies lieutenant governor can promulgate ordinance when the assembly is dissolved or suspended नहीं जेतले dissolve or suspend थाए सेतबेले हमर प्रेसिडेंट रूल थाए डायरेक्टली हमर पार्लियामेंट की लॉ करे ओके पार्लियामेंट की लॉ करबो आ जदी ऑर्डिनेंस आनिबार अछि की आनिबे प्रेसिडेंट हमर ऑर्डिनेंस लिखे कारण ता पई सेंटर पाखो को हमर पावर टा पळे कोडा नॉट करेक्ट रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोडा नॉट करेक्ट पचरी छी हला कोडा ओके वेरी गुड बीटा हमर देखो एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलरेडी मेंशन अछि ओके तो एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ठीक अछि तापरे टोटल स्ट्रेंथ हमर काउंसिल केते रहबे 15%
मैक्सिमम स्ट्रेंथ देबे 15% ऑफ कोन लोकसभा ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो लोकसभा रा जति की हमरा टोटल मेंबर थांती धर 543 तार 15% क्रेडिट देइछि कोन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट तो लोकसभा राज्यसभा 700 केते 90 89 90 हेगला नॉट हमरा केते ना 543 रो 15% जदी कैलकुलेट करबो 82 और 81 हमारा टोटल स्ट्रेंथ हमारा काउंसिलर so councillor minister the maximum strength of the councillor minister should not exceed 15% of the total strength of the lok sabha only eta kebe asithila o amendment act re kete number amendment act re asithila anyone know online very good tapan okay 91st amendment act 2003 आसला मन रखिबो 91st amendment act ओके तो 91st amendment act 2003 एटा आउ जहां भी एडवाइस टेंडर बाय द प्रेसिडेंट शैल नॉट इनक्वायरी एटा हमर ठीक अछि ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डिस्क्वालिफाइड ऑन द हमर केस ऑफ डिफेक्शन तो हमर एटा ठीक नाही कोडा ना बीटा हमर ठीक नाही हमें कहबो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोली केमिदी ना आर्टिकल 75 रे लिखा है आर्टिकल 75 इज टॉकिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके ना 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 नि आसिला द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस तो सी जहा एड एंड एडवाइस देबे इट कैन नॉट बी क्वेश्चन एनी कोर्ट रे भी सेटा हमर होबनी ना इंक्वायरी होबना okay next revision of the following which refers to human right court in India correct Court ASO वॉइस ब्रेक होजी ठीक सुबिला ना वॉइस ब्रेक होची क्लियर अछि सर नाउ ऑडिबल Yes, sir. कौन हबा आंसर आरा ओके आंसर सब तक ठीक अछि 1 2 3 तेनु देखिबा द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एटा केबे आसिला एटा ही परीक्षा रे पढिथिला 1993 रे आसिला प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट दिस कोर्ट कैन बी सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट with concurrence with the chief justice of the concerned high court okay state government can appoint an advocate as a special public prosecutor in every human right court एटा त मन रखिबो प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 जो थ्रे कोहा गला जे ह्यूमन राइट कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट माने स्पीडली ट्रायल करबा पई ह्यूमन राइट वायलेशन उडा को प्रति डिस्ट्रिक्ट रे हम हबो आ प्रति डिस्ट्रिक्ट रे जो हमरो ह्यूमन राइट कोर्ट हबो तो ता पई स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करो हमर कोन एडवाइस भी नबो द ह्यूमन राइट कोर्ट कैन सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट only with concurrence of the chief justice of the high court of that state for any human right court specify the a public prosecutor or appoint a advocate okay कोठु कोठा आसीछि त मते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोठु आसीछि आयरलैंड हमरो आयरलैंड रो आसीछि फंडामेंटल राइट यूएस रो ओके इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर ओके कनकरेंट लिस्ट Australia. ए वर्ष पढिथिला ओके 2023 रो यूपीएससी रो क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया ए क्वेश्चन ता माने होची एई वर्ष रो लास्ट ईयर 2023 रो यूपीएससी रो प्रीलिम रे पढितला ओके तेनु तुमको
सब लिस्ट गुड़ाक निहाती मन रखा दरकार तो आंसर है 351 तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर आयरलैंड रो आनीचे फंडामेंटल राइट अमेरिका कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट कनाडा विथ ग्रेटर पावर टू यूनियन आमे कहले फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस तो एटा हमर कोठ आसी कनाडा रो हमको से लिस्ट टा मन रखिबा ओपीएससी रे डेफिनेटली प्रथम चैप्टर रो जो लिस्ट देइची जे कोठू को पावर आसी को शेड्यूल ले कोन अछि एंड तमरो जो हमर को कमिटी रे को कमिटी टा का अंडर रे थिला प्रथम माने तमरो प्रिएम्बल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट ड्यूटी डीपीएसपी एई चैप्टर रु तमरो निहाती 50% पॉलिटी क्वेश्चन एथु पड़े एंड तमे जदी पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ी देला मु कहबी जे 80% तमरो पॉलिटी रो कोर्स ओवर है सेति की जदी जने पढ़ी देला 80% क्वेश्चन कर दो ओके तो दी चैप्टर आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट तेणु ताकू बिल्कुल मिट करबनी सब बेले परीक्षा रे पढुची आ पढी आसुची नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Indian Constitution the validity of a law placed in the 9th schedule cannot examined by any court and no judgment can be made on it हमर कोन हबा आंसर आरो ओके आंसर मु ऑलरेडी दे दीची ओके ओनली वन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल रे कॉन्स्टिट्यूशन में रखि परिबो किंतु 9th शेड्यूल रे जोडा रहिबो दैट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द कोर्ट एटा रो तो जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अछि इवन इफ तमे 9th शेड्यूल रे जदी कोनोसी जिंस रखुछ स्टिल इट कैन बी रिव्यूड एंड जदी एटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो अगेंस्ट रे तो सेटा को नॉल एंड वॉइड कर दिया जे एई केस टा को केस आपे गोटे पर्टिकुलर केस थिला हां वेरी गुड आयर कोएले को केस रे हितला जोउतरे कुहा गला इवन इफ द जो कोन होची पार्लियामेंट पुट द मेक सर्टेन लॉ इन द 9th शेड्यूल इट कैन सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू जोडा हितला माने हमरा कहबा को कहउची केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ओके मने रखबो दिस क्वेश्चन आल्सो लास्ट ईयर यूपीएससी 2023 रे क्वेश्चन ओके तेणु तुमको पॉलिटी रो जदी तमे कांसेप्ट बुझीच लास्ट टाइम ओपीएससी रे 23 टा क्वेश्चन जो हमर पडिथिला पॉलिटी रो 25 टा क्वेश्चन पॉलिटी रो पडिथिला ओके जाने खाली पॉलिटी जदी पढिला करंट अफेयर्स भी पढिला तमे प्रीलिम पास कर जदी भल से पढे लास्ट ईयर कट ऑफ तमरो अराउंड से 55 टू 60 भितरे जाइथिला तेणु तमे जदी गोटे दीटा सब्जेक्ट जदी थरोली पढि देला यू विल बी तेणु से जो जिनसा पढ़ुच पूरा डिटेल रे आउ कांसेप्ट वाइज क्लियरली तुम पढ़ डेफिनेटली प्रीलिम पास कर आपा जल्दी पढ़ले हम ए बडा क्वेश्चन हमरा पढ़िबो ओके तो ओनली व्हाट इज द करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन भी परीक्षा रे पढ़ितला लॉ और लिबर्टी भितरे कोन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी कोन अछि appropriate relation between law and liberty if there is no law no liberty okay तो मन रखिबा स्टेटमेंट जदी लॉ ही नहीं लिबर्टी ही नहीं तो तुमको लिबर्टी हमें कहूचे केते बेले हमको केते लिबर्टी माने कोन मीन बाय लिबर्टी एटा परीक्षा रे पढितला लिबर्टी माने कौन absence of restraint is liberty okay question भी पढ़ितला what do we mean by liberty absence of restraint UPSC 2021 रे क्वेश्चन मन रखिबो absence of restraint is liberty what is equality को परीक्षा रे पढ़ितला सेंटेंस ए दीटा क्वेश्चन पढ़ितला व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी absence of special privilege to anyone सेटा होचे हमर कोन ना तमरो इक्वालिटी
ओके ए क्वेश्चन नंबर यूपीएससी सेति पई कहूची यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा रट्टा मारी के मने रखो ओके तो जदी सेति की भी तमे लास्ट 27 28 वर्ष रा क्वेश्चन भी कर देलो हमर पॉलिटी रा कांसेप्ट ता भितरे गोटे थरा पूरा लक्ष्मीकांत को माने भल से बुझीबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दा जदी कर देलो पॉलिटी इज ओवर ओके जहां भी पढुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तम पार्टी रे निहाती रहइबा दरकार तारी भितरु तमे पिला खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके पास करके दो तेनु कारण सबु तक मेन कांसेप्ट सही थिर अछि ओके so if there is no law no liberty so the two are not one another rather they complement one another the liberty only comes as a result of established law when protect or provide freedom the same take place okay out of the following statement choose the one that brings out principle aligning the cabinet form of government सब बेले परीक्षा रे पडुछ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मु तुमको कहितली जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू लोक सभा ओनली as long as they have the number in the lok sabha they will be in the power okay so similarly हमें कुह कैबिनेट कोटा माने एक्चुअल क्वेश्चन भी लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम रा क्वेश्चन था 2023 रा प्रीलिम रा क्वेश्चन वॉइस ब्रेक होची वॉइस ब्रेक ना एबे ठीक रे सुबुची यस नो सुबुनी सबसे पाखरे छिडाले सब चिटिके दूर को गले भाइब्रेट होची माने पंग पंग होची mechanism of the parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people तो हमर कोन होची ना parliamentary democracy collective responsibility to the people हमें कहूचे केमिति तमरा हमें कहिले काहे कि मेजॉरिटी तमरा नंबर जदी नाही लोकसभा रे मेजॉरिटी नंबर माने आमे ही तांको वोट देकी पठै छै ना नहीं जदी मेजॉरिटी नंबर नाही माने मेजॉरिटी लोक माने तांकर कोन करना हंती सपोर्ट करना हंती तो दे आर डायरेक्टली रेस्पोंसिबल टू द पीपल द गवर्नमेंट as long as you enjoy the confidence of the house माने you enjoy the confidence of the people if you lose the confidence of the house of the people ताल तमर कोन ना गवर्नमेंट भांगी जिवो so a mechanism of the parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people so answer है जिवो कोन ना C is the correct answer इलेक्टोरल कॉलेज एडा भी 8 वर्ष रो क्वेश्चन थिला 2023 रो प्रेसिडेंट का इलेक्शन तमे एते पढिलो एबे क्वेश्चन करो सेति लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन पढ़िबो तमे कहबो मते नोट दियो लक्ष्मीकांत होची इटसेल्फ नोट तमे खाली खाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो देखो एई तमे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत पढ़िला पर भी करि परिबो एटा लास्ट ईयर प्रीलिम रा क्वेश्चन थिला आउ इलेक्शन रा जो प्रेसिडेंट चैप्टर रा इलेक्शन रा सेकंड पेज रे एई मेंशन अछि तेणु तुमको लगे इंपोर्टेंट नुहे हेउडा ही पकेबो से ओके ऑप्शन 1 1 1 and 2 2 only 1 3 तुमको एई जोडा दिया डिवाइडेड बाय 100 ना 1000 थिला 1000 थिला तो एकटा काटिबो ओके तो एक जो थिरा अछि काटि दियो तेनु कोन हबो only 2 किबा only 3 ओके only to the value of the vote of elected member of the parliament total value of the vote of all divided by total number of MP एटा लिखा हितला ना नहीं
ओके तो सेटा हमर आंसर है कोन ना ओनली ओके लास्ट क्वेश्चन आज रो with reference to the election of the president of India consider the following statement president पढिछ कुहा हेबे कहाँ हबो ओनली वन ओके तो हमर एंड लोकसभा राज्यसभा एमपी मानकर वोट समान कारण सबुतक एमएलए रो वोट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए तो सेम हबो ओके तो टू टा हमर रॉन्ग अछि सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर ओके ठीक अछि सो 41 हमें नेक्स्ट क्लास रे करिबा ओके थैंक यू गाइस